with the block 8, that is also the last unit of this MSOE 4, that is urban sociology. So let us begin with this urban governance. Urban governance. So local in urban governance, we will discuss about the role of different governmental agencies involved in urban governance. So we'll discuss in the first unit of this block 8, that is local self-government and emergence of voluntary organizations. Local self-government. So you know that the in local self-government, particularly it refers to the urban local self-government. Urban local self-government. It is this unit. The importance of the urban local government in India has considerably increased in post-independent era. Because prior to independence, there are very number of towns are very less. The level of urbanization was also very low. The population, urban population was also very low. So, but this after independence, it has increased. The urban population has increased. The number of urban cities come into existence. For that, for this reason, the importance of the urban local government in India has considerably increased in the post-independent era, and particularly with the inauguration of the Constitution, embodying the principle of democracy and a welfare state, emphasizing upon the governments in urban areas to promote social and economic development. So, government should promote social and economic development. Government should promote social and economic development. So how? That's why it is very important and pertinent to know what is local self-government and what are its, how it is evolved, how it emerged. So, what is local self-government? We must know what is local self-government. So, different scholars have defined local self-government in different ways. So, according to P. Stone, who defined local government as the local government is that part of the government of a country which deals with the people of a particular locality. So, local government is a part of the government of a country. ଏହା ଗୋଟେ ଦେଶର ସରକାରର ଏକ ଅଂଶ and it particularly ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଗୋଟେ locality ବା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଜଡ଼ିତ. So that means, in other words, local government କହିଲେ government of the locality or that is local government. So, but Encyclopedia Britannica says, so local government refers to an authority to determine and exercise measures within a restricted area inside and smaller than the whole state. So, another definition, local government कहले I mean the local government is the administration of a locality, a village, a city, or any smaller area in a state. So, local government is the administration of a locality, a village, a city, or any other smaller area in a state. So, Golding, according to L. Golding's opines that local government is the management of their own affairs by the people of a locality. When people of a locality manage their own affairs themselves, we call it a local government. So, local government is a government of the locality or a particular area and which is managed by the people themselves. So, that is what we mean by
So local government may be said to involve the concession of a territorial or non-sovereign community legal rights over organization to regulate its own affairs. So a particular when a local area has the sovereignty to regulate its own affair. So when he has the capacity, he has the freedom to regulate his own affair within a particular locality, you can say it as a local government. So local government, this local self-government or global government, or we can say urban local bodies. So its definition is differ from respective countries or respective states. So it is a well-defined area. Local area is one of the important characteristics of local self-government. Because local government, it means government of the locality. So at the locality or a specific area, so that's why local area is one of the primary characteristics of a local self-government. गुरुत्वपूर्ण लक्षण कहीं एरिया बिना लोकल गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माने जेतु लोकल को बुझौछि तेनु एटा गोटे लोकल एरिया को अंतर्गत करबो इट नेचुरली इंक्लूड ए पर्टिकुलर लोकल एरिया सो लोकल एरिया मींस ए फिक्स्ड area that is decided by the state government, and this can be termed as a village, a town, or a city. So similarly, second, that is local authority. The second characteristic of local self-government is local authority. And by local authority we mean the administration of a particular locality. Administration of a particular locality. So it refers to the that this administration of this local area is run by authority or a group of persons which directly elected, who are elected by the people directly in that particular area. Or in other words, you can say it is the people, it is the local people who elected a body or a group of body or a group of people to exercise authority over them. So that's why local authority refers to the authority of these people who are elected by the local people of that area. So then the third characteristic is civic amenities for local inhabitants. So civic amenities. So all civic amenities must be provided in the local self-government. It is the duty of this local self-government to provide the civic amenities to its the people of the locality, those who are living, or the inhabitants of the locality. So that's why the inhabitants of that locality, the primary objective of this local government is to provide these amenities to the people at their doorstep. And people who are living in this area must have the necessity, necessity to fill their requirement, and their requirements should be filled up by the local government. Then finance is also necessary for any government, because without a kind of certain finance or amount of finance, no local government can run itself. So that's why finance is also an important characteristic of a local self-government. Without finance, no self-government can run. So any developmental works to be performed in that area requires some sort of finance. So that's why finance is also one of the important characteristics of a local government, because without finance, no local self-government can maintain itself, or nor it can do any developmental work for the people of the locality. So that's why finance is an important characteristics of local self-government. We're dealing or discussing with the characteristics of local self-government or urban self-government. So then local autonomy. So local autonomy is also one of the characteristics of local self-government.
that it means the freedom of the local bodies in discharging their duties. So local bodies must enjoy all sorts of freedom to discharge their duties for the inhabitants of that area. So that is what is required for the local self-government. And local participation. Another characteristic of local self-government is local people's participation. So people of that locality, of the local self-government, must participate in the government, in the governance, process of governance, because the participation will make the governance more effective. Unless people ventilate their grievances to the authority, then authority can take necessary steps to fill up their different kinds of needs. So that's why it is the people must participate. A mere participation is not sufficient. The people must participate effectively in the local government, so that the government can take necessary steps to fill all the necessities of the local people. So participation, local participation, not mere participation, but an effective participation is necessary for the effective governance of the local self-government. Then another is leadership. There must be leadership in the local self-government. The leadership must be effective, because success of a government depends on the leadership quality and effectiveness. If the local leaders, those who lead the local self-government, are effective and has the capacity to fulfill the all kinds of needs of the locality as well as the local people and the local area, then the leadership then will be praiseworthy. So that's why effective leadership is required for the local self-government. So these are the another important characteristic of local self-government. Then local development. So local development must receive the priority in the local self-government. It is not only the authority, but also the local leader who prioritize their developments, and people should ventilate this to the leaders, and leaders should ventilate to the local authority to fulfill their development. So development means all-round development of all people and all areas. So local area, a complete development of the local area, not a lopsided development. Rather, a holistic development must be carried out by the authority of the local self-government. Then accountability. Accountability. There must be accountability of the local authority as well as the leaders to the people. So people and the local authority as well as the leadership must be accountable to the people, directly accountable to the local people, because it is the people who elect them. It is the people whose price these authorities are there to serve the local people. So that's why it is important that people must have, the authority must have accountability for the people. So these are the characteristics of local self-government. So these are, repeat another once again, there may be local area, local authority, local civic amenities, local finance, local autonomy, local participation, leadership, and development and accountability. These are the features of the local self-government. Then come to the next, that is distinction between local government and local self-government. Local government and local self-government, there is a minor difference. So local government, local self-government are interchangeably used. There is no basically difference, but it is interchangeably used. But the term local self-government is used in those countries which were under the colonial rule. Self-government आमर basically प्राक स्वाधीनता समय व्यवहार होता self-government. जेतु सेतबेले colonial ruler थी, some other were our ruler. So that's why they use for the purpose their local self-government. Self-serve करना से भी use होगा. But basically this mean to something. या एका कथा को बुझाए, there is no basic difference between that. Basic difference नहीं. बस लोग use in colonial rule रे केवल local self-government कथा का use होगा. After India got its independence, it is used only the local government. We use the term only local government have used after independence. Only local government concept was used instead of local self-government. However,
the term local government instead local self-government used in entry 5 of list of the 7th schedule of our constitution. Our constitution mention it, not that we automatically use this term local government. So instead of local self-government, we use local government because of the constitutional directives that is enlisted in the list 5 of the 7th schedule of our constitution. However, in spite of this deletion of the word self, but very often we use the term local self-government or local self interchangeably, meaning the same, So, however, the term signifies a government representative, a local inhabitant, more or less autonomous in character, instituted under state legislation in a village, in a district, or in a urban area to administer services as a distinguished from state to central services. So local self-government कहले कौन? Local self-government means it refers to a government. Local self-government को दे सरकार को refers to a government, the representative in local representative of local inhabitant. जो सरकार की लोकल आदिवासी स्थानीय आदिवासी मानकर रिप्रेजेंटेटिव स्थानीय आदिवासी मानकर रिप्रेजेंटेटिव मोर और लेस ऑटोनोमस एवं सेमानकर ऑटोनॉमी अछि एवं से लोक ऑटोनॉमी थिबो एंड इंस्टीट्यूटेड अंडर स्टेट लेजिस्लेशन एवं से लोकालिटी ता एक स्टेट लेजिस्लेशन राज्य विधेयक द्वारा युक्त हेतिबो कोडी ना गोटे ग्राम गोटे जिला कि गोटे शहर गोटे अर्बन एरिया कौन पाई टू एडमिनिस्टर सर्विस प्रशासन एडमिनिस्टर करिया पाई बा सेवा जोगेया पाई ए करा जाउतबा ए प्रक्रिया को हमें सेल्फ गवर्नमेंट बोली करता. So the urban local government is that part of the local government which deals exclusively with the urban affairs. So urban local government hoji local government ra pura part. It is a part of that local government. Urban government is a part of that local government which deals exclusively with the urban affairs. जाकि संपूर्ण exclusively का संपूर्ण भावे urban affairs सहित जड़ित. So there is a little distinction between local government and local self-government. However, and the functions, the local self-government function as a school for democracy, wherein citizens are imparted political and popular education regarding issues of local and national importance. So this local self-government act as a school. यह एक विद्यालय पर काम करे कौन पाई द स्कूल फॉर डेमोक्रेसी इटा इट इज एक्ट एज ए स्कूल फॉर डेमोक्रेसी गणतंत्र पाई एक स्कूल भावे कार्य करे इट एक्ट एज ए स्कूल फॉर डेमोक्रेसी where the citizens are imparted political and popular education regarding issues of local and national importance. लोक स्थानीय एवं जातीय गुरुत्व थिबा समस्या गुड़िक संबंध में शिक्षा संबंध में समस्या संबंध में माने सेठू एजुकेशन पांच लोकल गवर्नमेंट. सो द इंपोर्टेंस ऑफ द अर्बन गवर्नमेंट इन इंडिया हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा with the framing of the constitution embodying the principle of democracy and a welfare state. When our constitution after independence embodies a welfare state, जनमंगलकारी सरकार को ग्रहण कला. At that moment, the emphasize upon the government in urban areas to promote social and economic development. जितेबाला सरकार प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी एवं एम्फासाइज द गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज बा वेलफेयर स्टेट रे गुरुत्व देला सेतिक बेले द एम्फासाइज कला का ऊपर ना अर्बन एरियाज टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो जेतु है का वेलफेयर स्टेट इट इज नेसेसरी ऑन द पार्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट टू टेक necessary steps for the socio-economic development of the urban area, because welfare of the urban people is also a part of our part enshrined in our constitution. Our constitution gives directives to people to
promote the socio-economic development of the urban people. So that's why there is a important role on the part of local self-government to for the people. So then, how this local government evolved in India? Evolution. What is the emergence? How the local self-government emerged in India? So the emergency or evolution of the local government in India may be analyzed from two point of view or two phases. There are two phases of development of the emergency of local self-government. First is that is British phase, and second is the independence, post-independence stage. So the evolution of local government in India has passed may be analyzed under these two stages of development. First is British phase. So after the Britishers come to India, the first sign of local government can be traced to 1687. Right? The Britisher mane asiba pore a local government concept आम 1687 मसीह ओरिजिन उत्पत्ति आम चिन्ह कहीं the first time in that year there was established a Madras Municipal Corporation. Madras Municipal Corporation was established in the year 1687 by the Britishers. So later the Royal Charter of 1720 established a mayor's court in each of the three presidencies in India, that is Madras, Calcutta, and Bombay, or presently Mumbai. So these three presidency, they 1720 रे mayor's court was established by British government. So as a result, in 1850, 1850 an act was passed in British India, permitting the formation of a local committee, to make better provisions of public health. So, ये जो committee पढ़े 1850 रे गोटे British India रे गोटे committee formation आला, गोटे body formation आला जहाँ काम आला how to look after the public health, public स्वास्थ्य, जनसाधारण को स्वास्थ्य को देखिला पिला आरो कामो. The provisions of public health. So, however, for the real credit for the emergency of local self-government goes to Lord Ripon, the then British chief in India, Lord Ripon, in 18 May 82, 1882, 1882 मसीह Lord Ripon May मासरे has first held the Magna Carta of local government. Local government रो Magna Carta प्रथम थर पाई से establish करे 1882 मसीह and suggested to reform the instilling life into the local bodies. एवं सी जो how to provide life or to make the local bodies lively, local bodies की बा local प्रशासन को केमती जीवंत करियबो सेति पाई से केते को suggestion देले. तेनु सेति पाई he has been termed as the father of urban local self government. Lord Ripon को urban local self government रा father बोली कहा जाए, because he has take a very positive step for the development of local government. But local government was done to primarily to serve the British interest. But Lord Ripon has instituted this local government not for the welfare of the Indian people, but he organized this local self-government for British administration, for the betterment to help British administration. British प्रशासन को सहायता प्रदान करिया पाई बा प्रशासन में आउटे सहायता करिया पाई से एभली एक संस्था गठित. लोक मानको इंडियन मानकर वेलफेयर पे ही गठित नथले, बट इट टर्म फॉर दिस ब्रिटिश इंटरेस्ट अदर देन टू प्रमोट सेल्फ गवर्निंग बॉडीज. हमर सेल्फ गवर्निंग बॉडी रा प्रमोट करबार तांकर जो डिसीजन नथला, रादर he has constituted a local self government to assist the British government to take care of the public health and all this. But a significant development
after refunds come in the year 1907, when the rising discontent among the Indian masses led to the appointment Royal Commission. लोक मान गोटे डिस्कंटेंट देखा ब्रिटिश शासन विरुद्ध ब्रिटिश शासन गोटे रॉयल कमिशन अपॉइंटमेंट कले अपॉइंटेड ए रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन appointed a royal commission on decentralization to inquire into the financial and administrative relation of the government of India and the provincial government and the authorities subordinate to them. As a gote committee karigri to inquire kare financial and administrative relation ei jo tinta prakar government rahila British government, provincial government and local government and ka bhitere gote financial and administrative dekhiya pai se gote royal commission announce kale. In order to increase the devolution of power and gradual democratization of the local bodies, the Royal Commission had recommended the chairman should be elective and non-official, and the majority of members should be elected. The committee अधिकांश लोग elected है, एवं chairman मध्य elected है, non-official है. Another recommendation of this committee that municipal bodies should give more power. Municipalities should give more power in matters of taxation and control over budget. These are the recommendations of this committee. This act also provided for the reduction of official control over municipal bodies. Municipal bodies upare kemti control hrasa paibo ta upare semane madhya gurutwa dele. They gives more stress on reduction of control on municipalities. Then the Government of India Act 1919 was passed, and it has introduced system of diarchy, and the local self-government became a transferred subject under the change of a popular minister of the provincial legislature. So, diarchy माने दुई प्रकार व्यवस्था गोटे डेवलप विकास कले. So the Government of India after 1919, Government of India 1919, another Government of India Act was passed in 1935. 1935 से आउ गोटे Government of India Act आला जहाँकि provincial autonomy उपरे गुरुत्व देला, which gives more stress on provincial autonomy. Again, declare local government as a provincial subject. एवं सही Government of India Act 1935 local government को, the local self government को गोटे provincial government रो अंडर को नहीं आसला. इटा provincial government provincial राज्य autonomy को पड़े आसला. But the Act of 1935 abolished the system of diarchy. जो system of diarchy टा introduce करथला Government of India Act 1999 ताको Government of India Act 1935 abolish कर दला and introduced popular government in the provinces. The British गोटे popular government introduce कले एवं British 1947 में भारत छाड़ी चली गरे, किंतु से माने कोनोसी गोटे आत्मनिर्भरशील local self government प्रतिष्ठा करी गले नहीं. That local self government that the Lord Ripon established that remained haphazard and was not serving the people's needs and necessities. So, however, in the British phase, it laid the foundation of the local self government by Lord Ripon. So, by Lord Ripon को local self government रो father बोली को आ जाए. So then come the post-independence period. After the British period, they come the post-independence. हमारा भारत स्वाधीनता लाभ करी वाला 1947 रे. Then after independence, our constitution was accepted in January 26, 1950, and in that constitution, a reference to urban local self-government was entered in entry 5 of the list of the 7th schedule. सप्तम शेड्यूल अनुच्छेद रे स्टेट लिस्ट रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कथा रहिला. So but the most important landmark in the evolution of urban local government in the post-independent India is setting up a Ministry of Urban Development in 1985. 1985 रे urban development गोटे ministry गठन होला for the first time. जोटा कि गोटे landmark in the history of local self government. एटा history of local self government गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण घटना भाबे. The minister prior to that different ministry of health, ministry of some other ministries, urban development, ministry of health sometimes took the
पार्ट ऑफ दिस एगुडाकर सब चार्ज नौतले का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का अंडर थिला केतबेले ए डिपार्टमेंट अंडर थिला के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर थिला ए भली भाबे इट हैज शिफ्टेड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर बट हाउएवर in 1967 the subject of urban development was transferred to further Pune Ministry of Health which is designated as Ministry of Health, Family Planning, Work, Housing and Urban Development. ये बड़ी बड़ी डेवलपमेंट 1947 रे गठन। Then further in 1985, on taking place of alarming pace of the country at the government, then 1885 बेले को भारत रे urban government बा urban area, urban population बहुत बढ़िया को लागला। Then so in 1998, the government set up a national commission on urbanization. ये तो जनसंख्या बढ़ुची और सिटी संख्या बढ़ुची एवं पॉपुलेशन बढ़ुची तेणु तांका पाई गोटे ब्रॉड पॉलिसी फॉर्मुलेशन पाई गवर्नमेंट गोटा नेशनल कमिशन ऑन अर्बानाइजेशन गोटे गठन कले एवं एटा एई संस्था विभिन्न रिकमेंडेशन प्रदान करला। The Ministry of first recommendation are the Ministry of Urban Development to be restructured to make it the nodal ministry to build urbanization. Urbanization को गोटे नोडल एजेंसी कला को ए कमिशन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गोटे स्वतंत्र मिनिस्ट्री बनेला एवं ए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट गोटे नोडल एजेंसी हला फॉर अर्बनाइजेशन एवं गोटे नेशनल अर्बनाइजेशन काउंसिल गठन करा गला टू फॉर्मुलेट अर्बनाइजेशन पॉलिसीज। सो जेतु अर्बनाइजेशन इज ग्रोइंग रैपिडली इन इंडियन सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस सो ता गोटे अर्बनाइजेशन काउंसिल गठन करी तार फंक्शन इवैल्यूएट करिवो एवं तार पॉलिसी फॉर्मुलेशन अर्बनाइजेशन पई पॉलिसी करिवो एवं अर्बनाइजेशन केमती the problem how to solve the problem of urbanization is so related recommendation dela। Another important recommendation that an Indian Council of Citizen Actions was formed। Indian Council of Citizen पूरा मध्यम गठन करा गला एवं तार काम वाला तो ऑर्गेनाइज्ड वॉलंटरी इफोर्ट्स एटा गोटे वॉलंटरी इफोर्ट्स हिसाब रे गठन करा जाय एटा विभिन्न प्रकार सजेशन दबो ए सब करा गला। Another recommendation that a population of more than 50,000 सेटा गोटे अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट अंडर रे छड़ा गला जो शहर सिटी 50,000 उधा ताको प्रमोटेड वन अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट ताको गोटे अर्बन कम्युनिटी डिपार्टमेंट रो विकास करा गला एवं सेटा गोटे अर्बन कम्युनिटी रे करा गला। सो दिस इज हाउ दैट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हैज इवॉल्वड इन इंडिया in British period and in after independence the post independence। Then a Nagarpalika bill was passed in 1989 the Nagarpalika bill passed kara gala 1999 bere ebong Nagarpalika bill was there to this Nagarpalika bill introduced kara gala 1899 bere to implement the local self government are the trusted the people। In 1991 the Congress ministry come to power and it introduced bill with slight modification से तादरे किछि modification कला एवं आर पर्पस कोन थला to rejuvenate the urban local government को to revitalize the urban local government and to develop it more vibrant to make it more vibrant the Nagarpalika bill was passed and Nagarpalika it was further it was modified by the Congress government in 1991 then so it is the constitution after 1991 in 1992 a 74 constitutional amendment was passed 74 74तम संविधान संशोधन बिल आसिला जोटा कि 1993 बेटरू कार्यक्रम हैला कि 1992 रे बीच आसिला जोटा कि वे पार्लियामेंट रो उभय हाउस रे पास करा एवं सेही बिल रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का नुवा टर्न हवा जोटा कि हमर पीआरआई इंस्टीट्यूशन एट विलेज लेवल पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इंट्रोड्यूस विलेज लेवल एवं म्युनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन अर्बन गवर्नमेंट एटा इंट्रोड्यूस कराला एवं तांको फुल पावर विभिन्न प्रकार क्षमता प्रदान करागला विभिन्न प्रकार फाइनेंशियल सुविधा प्रदान करागला एवं बहुत प्रोविजन एवं डिफरेंट काइंड ऑफ रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ये सब व्यवस्था करागला इन द 74 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तेणु संविधान 74तम संशोधन बयाला बेरे जोड़ा इफेक्टिव है 1993 रु अनेक प्रकार इंप्रूवमेंट आला इन द लोकल अर्बन बॉडीज एवं लोकल अर्बन बॉडीज रो तार एटा को गोटे स्ट्रक्चरिंग कला जेमति पीआरआई विलेज को पंचायत राज इंस्टीट्यूशन गांव को ताको तीनोटी थ्री टायर सिस्टम ऑफ आवर लोकल गवर्नमेंट है करा गला विलेज लेवल रे रूरल सोसाइटी रे सो सेटा थला कोन डिस्ट्रिक्ट बॉडी ब्लॉक पंचायत समिति देन
ग्राम पंचायत सो सिमिलरली इन म्युनिसिपालिटी अर्बन गवर्नेंस रे ताकू 6 भाग रे व्यक्त करा फर्स्ट होजी first the municipal corporation, then municipality, then notified NAC by notified area council, then town area committee, township and cantonment board. So these are the different types of layers of urban local government. Urban local government. It is urban local government of tiers. So these are the different local governments. Municipality, municipal corporation, municipal council or notified area committee, town area committee, township and cantonment board. These are the, in Nagarpalika bill, this structuring of urban local government was made under this, and municipal corporation are set up in big and large cities. Bada sahara manankare municipal corporation rohila headed by a mayor and a standing committee. Ote committee rohila ebong tar ote mayor rohila. Similarly, municipal council was a statutory body created by an act of the state legislature, and the criteria setting up to varies from state to state. Municipal council consists of elected corporated body and associated members. It is continue for 5 years. So once elected, the council continue for 5 years. Then come notified area council (NAC). So NAC was set up in those areas which are not yet ready for declaring themselves as a municipality. जो गुड़ाक म्युनिसिपालिटी हेनी से गुड़ाक एनएसी बा नोटिफाइड एरिया काउंसिल भाबे ग्रहण करागला एवं नोटिफाइड एरिया काउंसिल हिसाब रे दे सर्व वेरियस पर्पसेस द स्टेट गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट ए कमिटी याकू नोटिफाइड एरिया कमिटी कहला द कमिटी एडमिनिस्ट्रेट दिस एरिया एवं सेही एरिया को प्रशासन प्रदान करबा दायित्व होला से कमिटी देन कम नेक्स्ट कमिटी हला टाउन कमिटी इट इज इन टर्म ऑफ सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी they are constituted in the smaller towns. छोटे टाउन বা ছোট শহরে যেটি জনসংখ্যা কম সেটি টাউন কমিটি আন্ডারে শাসন প্রদান করা গলা সেই এরিয়ারে দেন কম ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড দেন টাউনশিপ so township of the area well planned and contains several facilities ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏରିଆ ଯୋଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି अवेलेबल ଥିବ and expenditure of these services are bear by the industries concerned. ये जो टाउनशिप गुड़ा एटा बेसिकली को एरिया रहला ना एटा जेंति जो से गुडे नवा इंडस्ट्री बसियो फॉर एग्जांपल राउरकेला हमें कहू जे राउरकेला टाउनशिप सो सेठी जे फर्स्ट हमरो हला स्टील प्लांट सो सेठी गुडे टाउनशिप करथला से गुडे टाउनशिप को ए प्रकार एजेंसी प्रदान करागला एवं इंडस्ट्री कंसर्न तार सर्विसेज एक्सपेंडिचर सब बियर करबो से इंडस्ट्री but administration will be by the urban government. सेटा को टाउनशिप कहवा जोटी इंडस्ट्रियल एरिया जेमति हमर सुनाबेडा राउरकेला एगुडा सब टाउनशिप कह जाय सो देन कम कैंटनमेंट बोर्ड हमर आर ओनली बॉडीज व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री कैंटनमेंट साधारणतः हमर डिफेंस सहित जड़ित छोटे जो एरिया रे कैंटनमेंट डिक्लेयर करा जिवो से कैंटनमेंट बोर्ड बॉडीज सेटा कंट्रोल बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ताको डिफेंस मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट रो डिफेंस मिनिस्ट्री ता कंट्रोल करबो सो नगरपालिका बिल 1999 रे ए प्रकार सब प्रोविजन व्यवस्था करायो सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी एंड अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट द हाउसिंग बोर्ड द सिंगल पर्पस ऑफ ऑल दीज एजेंसीज municipal corporation and other single purpose agencies a statutory body under separate act in the respective state government the HUDCO was established to provide housing facilities in all these urban municipal bodies eguda kare सब boya pai goda HUDCO स्थापन करा गला and to promote the development of a city the improvement trust are constituted केतक improvement trust madhya करा गला केतक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने सब इंप्रूवमेंट ट्रस्ट से लोकल गवर्नमेंट रो बा से अर्बन गवर्नमेंट रो केमि डेवलपमेंट करा जिवो द पावर एंड फंक्शन ऑफ द इंप्रूवमेंट ट्रस्ट आर स्पेसिफाइड गोटे एक्ट द्वारा जोटा कि स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करथिबो बा लोकल बॉडी क्रिएट कर त गोटे इंटरेस्टेड वेरिएशन एथे देखि होय ए प्रकार जो इंप्रूवमेंट ट्रस्ट रे सो हमर दिल्ली रे जेंते दिल्ली डेवलपमेंट ट्रस्ट बा दिल्ली डेवलपमेंट एजेंसी जोटा गडा आइतला जस्ट आफ्टर इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान सेटा मध्य से आर गोटे एग्जांपल
So these are the certain Nagarpalika bill. This municipal administration has been structured under this 6-tier model under the 74 constitutional amendment in 1992, which had become effective in 1993. So then, what are the functions of municipalities? Municipality कौन सा function? We'll discuss about the functions of the municipality. So there are certain functions laid down in the 12th schedule of the constitution of the local bodies. So municipalities will perform certain function. This municipality function, urban planning, including town planning, urban area planning, regulation of land use and construction of building, land केमती की यूज करिवो तार रेगुलेशन एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कोटा घर गढ़िबा then planning for economic and social development of the urban area रो सामाजिक और अर्थनैतिक विकास ପାଇଁ योजना करिबा then building road and bridges, widening road and bridges, building and widening roads, building bridges over rivers or besides water supply for domestic, industrial and commercial purposes, water supply, provision of water supply kariba municipality under water supply, both individual consumption, commercial consumption and other consumption. Then public health, sanitation and solid waste management. These are also the functions of municipality. Public health, because majority of the population of the city are very increasing at a very high rate. To provide health facilities to all these people under a municipality is also an important affair. So that's why the purpose of municipality, aim of a municipality is to provide public health, sanitation, solid waste management, because the location क्या बहुत हो जाती है, drainage water, solid waste management, solid waste and liquid waste management is सबको मतलब तारा दायित्व. Then fire services, क्योंकि बहुत लोग हो जाती है, बहुत कोठाबाड़ी अच्छी एवं क्या मची, then fire services मतलब able to provide necessary wherever they need inconveniences caused, then fire services will be there. Then another is urban forestry, protection of environment and promotion of ecology. Urban forestry, जो भी urban forestry सब अच्छी, urban area जो किसी अंचल पूरी forestry बा जंगल अंचल थी वो ताको protect करिया, and to protection of environment, urban environment को केमती protect करिया मतलब municipality कम urban environment पहले हमें कहाँ बुझो साधारणतः water, air, soil ये सब केमती pollution, noise pollution ये सब केमती न होगा, सेति पाई necessary protective measure ग्रहण करिवा एटा मध्य उडे काम. This is also the work of a एटा मध्य उडे काम रहला तार municipality उडे काम रहला. Another is promote ecological aspect, हमारा environment, social ecology केमती better हबो ताको मध्य promote करिवा काम. And a small slum improvement, जो slum जो बस्ती अंचल जो रहला बस्ती अंचल विकास केमती बस्ती लोक मान खैतान तंका भितर हेल्थ एंड सैनिटेशन तम प्रोवाइड करिवा ए सब काम रहला municipality काम. Another is safeguarding the interest of weaker sections of society and including the handicapped, mentally retarded and physically challenged persons. ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସବୁ ରହିଲେ ଏ ଯେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେଫଗାର୍ଡ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇୟର୍ନିଂସ୍ ସେମାନେ କେମିତି ଇୟର୍ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ steps नबा मतलब municipality काम. ଆଉ कोन ना urban poverty alleviation. ମୁଁ କହିଥିଲି गला काली जे आमे सबले भाबि नउतले जे poverty rural society केवल अछि urban society नाही, କିନ୍ତୁ वर्तमान recent studies show that there is urban poverty is more acute than even the rural poverty. तेणु ସେଥିପାଇଁ urban ଅଞ୍ଚଳରେ जो slum area ରହିଲା ସେଥିପାଇଁ ବସ୍ତି migrant labor ରହିଲେ ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ urban poverty situation पड़ुची. तेणु से urban poverty केमती alleviate करा जाई परिबो ସେଥିପାଇଁ एवं urban बेकार संख्या मध्ये बढुची एवं तांको प्रोवाइड करिया एम्प्लॉयमेंट एवं urban poverty ह्रास करिवा ये काम मध्ये अछि municipality रो.
Provision of urban amenities like parks, gardens, playgrounds, cinema halls, amenities. ये सब मंडपज ये सब प्रोविजन करवा कमला पार्क बिल्डिंग करवा कोटे गार्डन तैयारी करवा प्लेग्राउंड एते लोक कहले पिला माने खेलिबे तांके स्थान दरकार ये सब काम प्रोविजन प्रोवाइड करवा मध्य म्युनिसिपालिटीज रो काम तापे प्रमोट कल्चरल एजुकेशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स एजुकेशनल कल्चरल एजुकेशन पाई प्रोविजन करवा म्युनिसिपालिटी तार स्कूल बसेबो कॉलेज बसेबो केमती पिला मान को एजुकेशन बेटर एजुकेशन दिया जीवो सेति पाई व्यवस्था करबो स्कूल एजुकेशन एंड कल्चरल केमती विभिन्न कल्चरल मीटिंग अब कल्चरल हॉल सब रहइबो कल्चरल मीटिंग्स पाई कल्चरल हॉल बिल्ड करबा ह ए सब काम रहइबो मध्य म्युनिसिपालिटी रो देन ड्यूरियल ग्राउंड्स एंड इलेक्ट्रिक सेरामोनिटोरियम जो हमारा सबदाह व्यवस्था जो सब श्मशान विकास एवं श्मशान लोक संख्या भितर श्मशान अरेंजमेंट करवा एवं श्मशान विकास हम सेटा देखा एवं कैटल पॉन्ड्स प्रिवेंशन क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स कैटल पॉन्ड्स माने हमें जो बुला गाई सब गोरु अच्छे सब तांको केमती कन्फाइनेशन रहिबे तांकर जतन नवा एवं तांको पानी पीबे तांको पई प्रोविजन ऑफ वाटर करवा एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एवं एनिमल जो पशु मान प्रति क्रुएल्टी निष्ठुरता देखा जाउची तो माने चार जन दे बात खाया गुनाती से कोने बोले कि पॉलिथिन खाउचंदी एवं विभिन्न प्रकार रोग शिकार होचंदी सो सेगुडा को मते तांको प्रति निष्ठुरता कोन करवा एवं जो मरा जाउची सब विभिन्न पशु को हत्या करा जाउची परमांस पई रास्ता घाट करे जो नै सेठी ताको प्रिवेंट करवा ए सब म्युनिसिपालिटी रो काम आ कोन प्रोवाइड द वाइटल statistics make provision for the vital statistics means the birth marriage death ये सब registration of marriage birth death registration करवा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स प्रदान करवा से रासो होची आर काम कर म्युनिसिपालिटी अपन बर्थ प्रोवाइड बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट सो म्युनिसिपालिटी प्रदान करबो सो पब्लिक अमेनिटीज लाइक स्ट्रीट लाइटिंग ये सब करबो बस स्टॉप्स प्रोविजन ऑफ सिटी बस पब्लिक कन्वीनियंसेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब प्रोवाइड कर म्युनिसिपालिटी रो काम मध्य रहबो अगुन रेगुलेशन ऑफ फ्रेमिंग लॉज फॉर द to check criminals take necessary steps to check police personnel को नियुक्त करी जल्दी कंट्रोल करिवो क्राइम इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द टाउन ये सब रहला फंक्शंस ऑफ म्युनिसिपालिटीज देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अर्बन प्लानिंग एट लोकल लेवल तबरे में पढ़िबा दैट इज कंसर्न विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर अर्बन प्लानिंग एट लोकल लेवल अर्बन प्लानिंग पई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोन संगठनिक संरचना कोन will discuss. The 74 constitutional amendment stipulated setting up a metropolitan planning committee. तो 74तम जो संविधान संशोधन हला सेटा गोटे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमिटी गड़िया पई गोटे सजेस्ट करना तेनु सेटा this requires that in every metropolitan area a metropolitan planning committee would be constructed for preparing a development plan for the metropolitan area as से जो कमिटी रो काम कोन ना गोटे डेवलपमेंट प्लानिंग करिवो फॉर दी मेट्रोपॉलिटन एरिया रो केमती डेवलपमेंट हे करिवो ता पई से गोटे प्लानिंग करिवो प्रिपेयर ए प्लान फॉर दिस मेट्रोपॉलिटन एरिया दैट इज द वर्क ऑफ द म्युनिसिपालिटी ए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अर्बन प्लानिंग करिवो एंड देन दिस डेवलपमेंट प्लान मस्ट टेक द फॉलोइंग केते फैक्टर को अकाउंट को नबो जो डेवलपमेंट प्लान कमिटी फॉर्मेशन करबो से केतेटा दिस प्लान विल बी प्रिपेयर्ड बाय द म्युनिसिपैलिटीज एंड द पंचायत्स इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया एटा का कराबो ना म्युनिसिपैलिटी द्वारा प्लान ता करा जिवो एंड द मास्टर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट बिटवीन द टू मैटर्स कॉमन इंटरेस्ट उभय प्रशासन भितर जो मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट साधारण इंटरेस्ट जो रहतिबो ताकू कर दिबो एवं शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेस जल एवं अन्य प्राकृतिक संपद को शेयर करिया पई रहइबो
objective and priorities set up by the government of India and the state government. उभय राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार जो प्रायोरिटी और लक्ष्य रखिछन्ति ताकू मध्ये माने दृष्टि देखिबे अर्बन प्लानिंग कला बेले आ कोन करिवे ना अदर अवेलेबल फाइनेंशियल और अदर रिसोर्सेस जदि किछि अरेंजमेंट अछि सेगुडा को विषय मध्ये दृष्टि दे ए सब को दृष्टि देई से कमिटी जो हमर प्लानिंग कमिटी ए सब को विचार को नै तार प्लानिंग कैप्चर करियो. So this, after this, then the urban local bodies in India failed to come up to the people's expectation. ये सब सत्वे urban bodies, the urban local bodies in India failed to come up to people's expectation. ସେମାନେ तथापि ଲୋକମାନଙ୍କର expectation ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି. ସେଥିପାଇଁ there is a major shortage of finance is a major constraint. कहीं काम कर पर नांती ना shortage of finance, corruption, nepotism एगुडा का मध्य obstruct करूची जे काम करिवारे सक्सेसफुल काम करियारे. Audit is not conducted, non-utilization available resources properly, non-utilization केतेक resource रे utilize हे पर non-utilize रही होची एगुडा सो केतेगुडा प्रॉब्लम रहउची. तर ए जो प्लानिंग एट लोकल लेवल करिवारे कोते प्रॉब्लम. प्रथम प्रॉब्लम है कोन ना एगरे अर्बन लोकल बॉडीज इन इंडिया फेल टू कम अप टू लोकल एक्सपेक्टेशन. एला प्रथम समस्या अर्बन प्लानिंग लोकल लेवल करे कोन समस्या रहउची. सेकंड होची नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स जो केतक रिसोर्सेस अछि सेटा मध्ये यूटिलाइज हेई पारु नाही. थर्ड प्रॉब्लम होची म्युनिसिपल फाइनेंस सफर फ्रॉम सीरियस फ्लॉज. म्युनिसिपैलिटी पाखरे अधिक फाइनेंस पई फाइनेंस रा सुविधा नाही तेनु से त्रुटिपूर्ण फाइनेंस नीति सेटा पई जाई. आनंद होची ऑडिट इज नॉट कंडक्टेड रेगुलर बेसिस. ऑडिट हो म्युनिसिपैलिटी अनेक गुडाके अनेक समय ऑडिट होनी जोटा कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी करप्शन करियारे सहायक होची. एंड देयर इज एक्सेसिव कंट्रोल ओवर अर्बन लोकल बॉडीज एज ए रिजल्ट दैट परफॉर्मेंस सफर. अर्बन लोकल बॉडीज ऊपर एक्सेस कंट्रोल सरकारंकर रहउची बा लोकमानकर प्रेशर रहउची सरकारंकर कंट्रोल एक्सेस कंट्रोल रहउची जा फले आर परफॉर्मेंस कमी जाउची. सो एगुडा सब जदि माने हमको समाधान करा जाई पाइबो त अर्बन प्लान लोकल लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग को बेटर अप करा जाई पारिबो. Then suggestion for improvement in the functioning of the local administration. हमर जे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जोडो का हमें कहूछु कोन म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन बा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ताको हमें केतेक सजेशन द्वारा इंप्रूव करि परिबा. ए जो प्रॉब्लम सब रहला फेस करले हम देखिले ताले कोन कले हमें ए को इंप्रूव करि परिबा. So certain suggestions that people's participation is a must. Effective mere participation is not necessary. Effective participation people is a must. For the improvement of this administration, effective participation of people is a must. Second, the representative of people is very essential. Representation. People must properly represent their grievances to the municipalities. Third is that coordination between municipal government and other public agencies. Coordination. There must be coordination. Municipal government, state government, and other agencies. Coordination जदि रहइबो ताले हमें local administration कार्यटा आउरी सफल होबो. Another is political support. Political support must be behind this municipal administration. Municipal administration पछरे जदि political support न रही तार political funding आसीबा ए सब करिया तो सहज होबनी. विभिन्न प्लानिंग को इफेक्टिव करिबा ए सब सहज होबनी. तो political support मतलब दरकार. Then organizational performance को बढ़िया efficient होबा. जो organizational performance of the organization structure of performance ता efficient होबा. सेति पई necessary steps training to the personnel and performance appraisal गुडे हवा दरकार. इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करा गले स्टाफ मानन भितरे आउरी बेटर हवा से मनकर. Then another is that adaptable to shift priorities. एटा गुडे फ्लेक्सिबल थिबो तो अडॉप्ट एवं निजु को अडॉप्ट करथिबो चेंज ऑफ प्रायोरिटीज. निजर प्रायोरिटी जोडा अग्राधिकार जोडा दला कथा हमें गुडे अग्राधिकार फिक्स कराई छै हम एटा अग्राधिकार दे दिबो दरकार पड़ला से अग्राधिकार चेंज हे ता आबरे शिफ्ट करबो
ए प्रकार फ्लेक्सिबिलिटी रहा और प्रायोरिटी फिक्स होगा दरकार तेणु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजको अडाप्टेबल करिवो डिफरेंट सिचुएशन सहित यदि अडाप्टेबल करि परला ताहले मध्य एटा उते परफॉर्मेंस का फंक्शनिंग बेटर होई परिबो देन इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस हमर प्रोग्रेस इवैल्यूएशन करे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केते प्रोग्रेस कला एडमिनिस्ट्रेशन लोक माने तको पैसा दोचंदी स्टेट गवर्नमेंट पैसा फाइनेंस दोची लोक माने टैक्स दोचंदी ए सबुरा पूरे अकाउंटेबिलिटी रहला दरकार तेणु से अकाउंटेबिलिटी पाई हमको इवैल्यूएशन दरकार यदि हम वर्क इवैल्यूएशन न करिबा तार म्युनिसिपल ऑफिसर एफिशिएंट होबो तेणु सेठी पई राइट इवैल्यूएशन मध्य दरकार तो इवैल्यूएशन हेले अकाउंटेबिलिटी तो ए सब को जदी करा जाय परिबो ताले हमर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नो फंक्शनिंग का बेटर होबो will be better. Then another outgay improvement कौन करा जाय परिबो for participation of civil society organization local governance सबुठ important होची जे local governance को outgay केमती बेटर करा जाय परिबो सेति पई participation of civil society माने जो नागरिक समाज that means people senior citizens or people all the people citizens must participate in this हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन परे जो 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है लॉन्चिंग ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस 74 अमेंडमेंट गवर्नेंस डिसेंट्रलाइजेशन ऊपर गुरुत्व देला सो एम्पावरमेंट सिविल सोसाइटी हैज गेन्ड करेंसी इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे हम अनेक समय देखुचे अनेक लोक माने सीनियर सिटीजन माने हरे रहउछन्ती एवं लोक मानकर ग्रीवांसेस ठीक से मीट करा जाई पर नै तो ए सब पई द एम्पावरमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी गेन करेंसी इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे सशक्तिकरण हेची वर्तमान को मानकर ए जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज रे लोक मानकर so attempts are being made to involve the communities to manage service within the cities रे विभिन्न सिटीज रे जो सर्विस जो सेवा से मिलची ताको विभिन्न भागीदारी बेसिस रे पार्टिसिपेटरी मेथड भागीदारी मेथड और पार्टिसिपेट मेथड रे ताको सेति बढ़िया पई कम्युनिटी आ ग्रुप एवं रेसिडेंट्स एरिया रे तो मैनेज करिया पई विभिन्न सर्विस जो रहउची सेति पई गोटे कम्युनिटी गराइची रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो माने म्युनिसिपलिटी अंडर रे जो रहउचंती रे तांकर गोटे कमिटी गरा गलानी सेटा कोची रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन माने आदिवासी मंगलकारी संगठन संघ ए माने तांकर विभिन्न दाबी को नेकी म्युनिसिपलिटी के जिबे एवं तार डेवलपमेंट एवं हेबो जा पर सेमंगर पार्टिसिपेशन लोकल गवर्नमेंट आउ रेसिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड कविते कोऑर्डिनेशन रही विभिन्न सर्विस फैसिलिटीज अवेलेबल पाए जेतो nowadays the modern society is getting more and more democratized and the administration is more and more decentralized the role of volunteer organization has been increased एही परिप्रेक्षी हमको वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बा स्वयं स्वेच्छासेवी अनुष्ठान गुड़िकर गुरुत्वपूर्ण भूमिका मध्य रही एमाने गोटे प्रोएक्टिव रोल कहउचंदी इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम ऑफ अर्बन सोसाइटी रे जते प्रकार प्रॉब्लम देखा जाउची से सब को कार्य करिया पई अनेक समय रे अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन टुक द हेल्प ऑफ दिस एनजीओज because all these works cannot be services providing services all these work of the municipalities cannot be performed by the government itself ta dwara ba municipality dwara isu संपादन करा जाई पारु नहीं तेनु to facilitate or to reach the service at the doorstep more effectively that the NGO has come to the front and the different services has been allocated to by the local bodies local government to the NGOs for this NGOs are acting as the source of various information for various process to reach the components of the society. एमाने जो तथ्य पहुंचनी सेमाने लोकों बगैर पहुंचन directly. These organizations are also imparting training to the people of the locality. विभिन्न लोकमानन को sanitation ए समरे विभिन्न से how to take part in election ए सब विषय ट्रेनिंग दोचंदी सचेतनता बढ़ुचंदी एवं various problem विरुद्ध रे to fight against the corona विरुद्ध रे केमती लड़ाई करिया सेति पई different NGO madhya are also fighting and moving those steps to creating consciousness among the people लोकमान को तेरे सचेतनता सृष्टि करछन्ती सो ये सब काम मध्य NGO को दियाउछि these organizations became more important instrumental to improve the quality of service
in selective localities. And quality of service tanka jogu ସେମାନେ ଯେହେତୁ provide କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି better ରହୁଛି. So by this we complete the the local self-government. Then come to urban planning. Second chapter of this unit or this block is that is urban planning. So what is planning? And why urban planning is necessary? You might know, if you give a look towards the Indian cities and towns, you find these cities are growing haphazardly, since without any planning. It's just a cumbersome growth. It is in haphazard growth, unsystematic growth. You know how to make it more systematized. So planning is necessary. So the if you look toward the history of urban development in India, you find this urban growth has resulted in unplanned, haphazard, ugly urban settlement. Very growth of slums. These are very haphazard. जी जोड़ी पारला उड़े growth करी पकला, जी जोड़ी वाला house build करला, ता मनो इच्छा जी इंती करी पकला. So that give a very ugly design and became very also create many problems. So that's why planning is necessary. That's why urban planning is necessary to combat the menace of urbanization and resultant problem. जदि हमें urbanization बढ़िबो दिन को दिन बढ़िबो. Urbanization has been increasing, population in urban area has been increasing rampantly. तेणु जदि एको हमें planning जदि हमें न करिबा ताले it will create many problems. Urban and the menace, the threat of urbanization will go on increasing. An important function of planning is in a purely physical term is the judicious use of land as a scarce community in the urban area. Judicious use of planning is a guruttwapurna aspect of planning of land. It is the most important. Others are important, but planning of land is a master plan. The master plan कहले plan of land. Urban land ର କେମିତି management କରିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ କାହିଁକି urban land in urban area is very limited ଏବଂ scarce. ତେଣୁ judicious use of land planning କଲେ ଆମେ judicious use of plan କରିପାରିବା ଏବଂ cityଟା ugly ହେବନି, movement of people will not be choked, traffic jam ये ସବୁ ହବ ନାହିଁ, unwide road ये ସବୁ ହବ ନାହିଁ. So ସେଥିପାଇଁ planning is to increase the beauty of the city. Planning is a must. So land planning is thus a very essential need of the urban area. So the state government have to legalize upon planning and ensure its implementation, which is ultimately the responsibility of the urban government. State government एटी step नौची, किंतु याको implement करिबार ultimate responsibility होची urban government रो. तेणु urban planning, that's why very important for people. So planning ordinarily means a preparation for future. Planning means preparation for the future. हमें भविष्य ପାଇଁ केमदी योजना करिबा, भविष्य ପାଇଁ केमदी प्लान करिबा सेटा होची हमें प्लानिंग बोली कहूछु. So it is a conscious process. सचेतन भावे हमें योजना करू for our better management of the affairs. Urban planning is a process by which the use of land is controlled and its development is regulated. Urban planning होची गोटे प्रोसेस. एटा गोटे माने urban planning टा गोटे प्रक्रिया, एटा गोटे धारावाहिक भाई चली होता है. आज प्लानिंग करदला काली सरी गला सेमती किछ नाही. So process so far the urban centers exist, planning will go on continue. So that's why urban planning is a process by which the use of land is controlled and development is regulated by for public interest.
इटा रेगुलर करे कोन पई ना पब्लिक इंटरेस्ट समस्तंगर उपकार पई प्लानिंग करा जिवो जे प्लानिंग करा जिवो ताले समस्तंगर समस्त सुधार सम्मुखीन हो इट इन्वॉल्व बोथ द मेथड एंड डेवलपमेंट दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन एरिया केमती डेवलपमेंट हो केमती इवोल्यूशन हो केमती तार ऑर्गेनाइज करा जिवो ए सब को प्लानिंग हेल्प करिवो एवं प्लानिंग द्वारा आमे हमर एनवायरनमेंट को अरेंज करबा और इकोनॉमिक लीगल एस्पेक्ट को कंट्रोल करबा वेलफेयर प्रमोट करिया लोक मानकर ये सब संभव ही पाइबा डील्स विथ द स्पाटियल इंसिडेंट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन स्पेस दा कर पाइबो एंड द फेमस सोशियोलॉजिस्ट लाइक द लुइस मम्फोर्ड अर्बन प्लानिंग को डिफाइन करी कहचंती जे सिटी प्लानिंग और अर्बन प्लानिंग इन्वॉल्व्स द कंसीडरेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज इन टाइम एंड स्पेस ह्यूमन एक्टिविटीज मनुष्य से टाउन भितर केते बेले करिवो कोन करिवो तार टाइम और स्पेस स्थान रहिबो कोडी कोन करिवो टाइम एंड स्पेस ऑन द बेसिस ऑफ नोन फैक्ट्स अबाउट द प्लेस जोति की लैंड अछि हमें जति की नोन अवेलेबल लैंड अछि तार भीतर हमें कोन करबा सेटा को करबा अबाउट द प्लेस वर्क एंड पीपल कोन काम करबा को मानक पई करबा इट विल इन्वॉल्व करता है and it also involves the modification or relocation of various elements of the total environment ro relocation एवं तार एलिमेंट गुडा को मध्य इन्वॉल्व करिवो एंड एट द सेम टाइम इंक्रीज द सर्विसेज टू द कम्युनिटी एवं प्लानिंग करबा द्वारा आमे कम्युनिटी पई सर्विस टाको आउटके मोर इफेक्टिव करिया बढ़ाई पाइबा यदि प्लानिंग वे रहबो ताले सर्विस लोकन डोर स्टेप रे पहुंचा को और सुविधा हबो एवं क्विकर एवं इट कॉल्स फॉर द बिल्डिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ड्वेलिंग एंड इंडस्ट्रियल appropriate structure how building will structure where industry will be set install ये सब को हमको प्लान वे करिया को पड़ो एंड तेनु इट मार्केट कोट रहबो वाटर वर्क्स कोट रहबो डैम्स कोट रहबो ब्रिजेस कोट रहबो एवं रोड्स केमति रहबो रोड एक्सपेंशन पई केते प्रोविजन रहबो ये सब इन टाइमली एंड ऑर्डरली फैशन रे करिया पई जो व्यवस्था करा जाए ताहा को हमें अर्बन प्लानिंग बोली सो प्लानिंग इज बोथ सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्लानिंग टा खाली गोटे इकोनॉमिक कंसीडरेशन प्लानिंग इज आल्सो हैज इट्स सोशल यूटिलिटी और सोशल एस्पेक्ट मध्ये रहिछि केमदी ना द सक्सेसफुल प्लानिंग टेंड्स टू मेक्स पीपल हैप्पियर यदि प्लानिंग हम इफेक्ट करबा ताले गोटे अर्बन सिटी रे लोक माने सुख रहिबे सो हैप्पीनेस यदि लोक माने खुशी रहिबे एवं सब प्रकार इंटरकोर्स संग सुविधा मिलिबो एवं सुविधा रे रहि परिबे ताले क्राइम कमिबो criminal activity kariba controversy lokon bhitar conflict kamiba it will less case will be registered in the police so all these facility tenu eta planning ta ko gote socially social aspect madhya rahichi ebong samajik order rahibo samajik क्रमटा devastated haboni there will be social order social tranquility it will reduce tension jodi ame planning setting na kariba jodi town ne there will be no available scope for park garden ये सब न रहइबो ताले people what will they where they will couples will कोड बोलिबे पिला माने कोड बोलिबे how to spend their time ultimately it will create tension and it will create many problems so that's why it is a social aspect economic aspect अछि kana less wasteful यदि प्लानिंग करबा द्वारा हमर मोर इफेक्टिवली हमें हमर रिसोर्सेस को यूज कर परिबा एवं आवर रिसोर्सेस लेस वेस्टेज हबो यदि प्लानिंग न करबा ताले हमर रिसोर्सेस मोर वेस्ट हबो और वेस्ट मैनेजमेंट मध्ये बढ़ी जिवो तेनु हमें यदि रिसोर्स को वेस्ट रु बंचैले ताले एटा क्रिएशन ऑफ वेल्थ हला तेनु से दृष्टि देखिले एटा मध्ये गोटे इकोनॉमिक एस्पेक्ट तेनु प्लानिंग रो बाय प्लानिंग करबा द्वारा इट इज सेव्स आवर मनी एंड क्रिएट्स वेल्थ तेनु प्लानिंग बहुत गोटे सोशल एस्पेक्ट अछि एवं आरो ये aspect madhya economic aspect madhya achi so urban planning is concerned with the wide range of issues and problems of providing adequate housing employment school parks playground good transport facilities utilities health services ये सब management of housing ये सब को madhya improve करे urban planning housing residential colonies could be established karibo tar provision kon hoibo waste management kem debo is all these activities come under urban planning this problem requires a constant and continuous planning instead of piecemeal planning on different level
आमे हापाजरली गोटे कोन गोटे कर देले इट कंटीन्यूअस प्लानिंग दरकार करिवो ए सब जिंस so if continuous planning going on then town will be so this it will cover the city or provide the better welfare services to the people at the same time all these activities require there is no planning what happens जदि प्लानिंग न रहइबो ताहले कोन प्रॉब्लम हो देयर इज मल्टीपल प्रॉब्लम in urban cities जदि प्लानिंग न रहइबो there will be congestion there will be traffic jam road will be unwide so there will be waste management could not be take place people will react लोक मानकर प्रतिक्रिया आबो सब टाउन लोक माने टाउन ग्रो करिवो नाही इन मल्टीपल प्रॉब्लम्स will be there तेनो urban planning involves all these provisions of welfare services for the people and urban planning also cannot be seen in isolation rather the problem of urban planning related to the entire region हमें खाली urban area रो problem टाको deal कर देल हबनी हमें total region रो problem को मध्य deal करि परिबा so that's why it is a regional approach of planning हमें planning तारो regional approach को नबागु पड़िबो so that regional approach ले से region नो development हबो planning करिबा एवं urban नो planning मध्य हबो both side by side there must be coordination between regional planning and urban planning so regional and urban planning is closely related with each other regional planning deals with the physical planning of the town and cities and the countryside also countryside पाखापाखि adjacent town area रो planning केमति हबो ताको मध्य हमें देखियो पड़िबो urban planning भितरे so sociologist Patrick Geddes and Louis Mumford have written about regional planning and development as a prerequisite to any social planning and town planning regional planning टा गोटे प्री रिक्वायरमेंट बोले कहउछन कि इट इज अ प्री रिक्वायरमेंट फॉर टाउन प्लानिंग पैट्रिक गेडेस और लुइस मम्फोर्ड कहउछन सो दैट्स व्हाई रीजनल प्लानिंग मस्ट गो हैंड इन साइड बाय साइड टाउन प्लानिंग सो फॉर दिस टाउन प्लानिंग ए टाउन प्लानर्स आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी कोन करबो ना टाउन प्लानर सब अपॉइंटमेंट करबो and she should the town planner should be an expert in the area of land use planning and should utilize the minimum extent of land required for expansion of town and preserve valuable land से minimum land use करिवो for public use एवं केमदी land preserve करि परिवो एटा रहइबो टाउन प्लानर रो पर्पस तेनु प्रत्येक म्युनिसिपैलिटी मस्ट अपॉइंट ए टाउन प्लानर सब रहिबे एवं से सब प्लानिंग देबे urban planning is a very broad concept and it includes not only planning of street, houses, road, few civic amenities, buildings and urban. It also effective and creative. To be effective and creative, it has to be start from the village and cover the entire country. Town planning that total country के मध्य involve करिवो तो एटा गोटे टाउन प्लानिंग के आमी आइसोलेशन देखिया दरकार नहीं इन ए टोटल कंट्री रेस्पेक्ट एना अर्बन टोटल अर्बन सिटी रो रेफरेंस रे हमर रोड कंडीशन मध्य लिंकेज करिवो तेनु अर्बन प्लानिंग टा रो विकास देशर विकास सहित मध्य जड़ित कारण जदि अर्बन प्लानिंग रो सफिशिएंट डेवलपमेंट हबनी त देशर विकास टा मध्य स्लो डाउन हे जिवो तेनु we should utilize the resources of the city to the best advantage of the community as well as the state as well यदि जति की डेवलपमेंट पई हमें जो पैसा यूज करिबा टाउन रो से पैसा को बेटर कंट्री साइड रो डेवलपमेंट मध्य ता द्वारा जन ही परतो ता ऊपर नजर पकाउ पड़बो देन अर्बन प्लानिंग टेक्स प्लेस विद इन नेशनल फ्रेमवर्क अर्बन पॉपुलेशन जेतु इंक्रीज करूची आमे गोटे निर्दिष्ट जेमति हमर गोटे प्लानिंग हला एनआरएचवे जो बस चलला सिटी बस सो से प्लानिंग ता गोटे नेशनल फ्रेमवर्क रहिची सेटा तो गोटे केवल ओडिसा पे है नहीं इट इज ऑल ओवर जे हाउ टू रिड्यूस एमिशन बाय द व्हीकल्स एसएक्स यूज यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भलो न रही बारू लोक माने पर्सनल व्हीकल्स यूज करछन अधिक परिमाण देन सेटी पई टू रिड्यूस दिस and to provide facilities to the traffic jam hoची then to reduce this हमें national framework रे गोटे plan करा गला जे एटा को city bus provide करिबा so then urban planning must take place within a national framework and planning gets its power through its embodiment in the legislation and regulation which forms a part of a legal aspect of the state or center
तेणु यहाँ गोटे फ्रेमवर्क भितर आमको से प्लानिंग करा पड़ो एवं से फ्रेमवर्क भितर करागले ऑल सिटीज जेतु अर्बन सिटी संख्या सिटी सेंटर कथा बढ़ुची पॉपुलेशन बढ़ुची तेणु आमको गोटे नेशनल फ्रेमवर्क रे प्लानिंग करा पड़ो तेणु अर्बन प्लानिंग टेक्स प्लेस विदिन नेशनल फ्रेमवर्क तेणु सेमती करवा द्वारा प्लानिंग गेन करिवो प्लानिंग मोर गेन करवा तेणु अनदर इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लानिंग अकर्स थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच अगेन डिपेंड्स ऑन द स्टेट तेणु जो प्लानिंग आम अर्बन प्लानिंग कले ताको इम्प्लीमेंट किए करिवो पुन से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम करिवो ओडा इम्प्लीमेंट करिवो तेणु इट रिक्वायर्स administrative system then urban planning should not only political and socio-cultural feasible but it should be environmentally economically and technologically physically and physically feasible होगा दरकार ये सब दृष्टि feasible होगा दरकार urban planning environmental feasible होगा economical feasible technologically जैसे कि टेक्नोलॉजी यूज करिया कथा ताको मध्य टेक्नोलॉजी वैषयिक ज्ञान कौशल यूज करके केमती हमें कम ये रे करि परिबा सेति पई मध्य देवा कथा एवं फिजिकली कम पैसा रे केमती हमें प्लान करि परिबा इंफ्रास्ट्रक्चर केमती कम यूज गुरु हे परिबो ये सब को आम दृष्टि रखी अर्बन प्लानिंग की अर्बन प्लानिंग कॉन्सेप्ट कौटू आसला हाउ द इवोल्यूशन ऑफ प्लानिंग अर्बन प्लानिंग यू नो ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन लिविंग इन दिस अर्थ फॉर मोर देन 1 मिलियन ईयर लक्षे वर्ष पूर्व आम एटी बास कर आसुचे मनीष पृथ्वी बास कर आसुचे किंतु आमर जो बट द हिस्ट्री ऑफ सिटीज एंड टाउन्स इज ओनली 5000 years old मात्र 5-6,000 वर्ष भितर आम सिटी सभ्यतार विकास जोटा आमर कहीपर जो पुराना इंडस वैली सिविलाइजेशन मोहनजोदारो हरप्पा मोहनजोदारो एंड यूफ्रेटिस वैली उपत्यकार यूफ्रेटिस नदी उपत्यकार गढ़ सभ्यता और नील नदी उपत्यकार सभ्यता नाइल सिविलाइजेशन एक तो 3टा पुराना सभ्यता गढ़ उठला एवं 6th सेंचुरी विषय उज्जयिनी जो सहर विकास होता तेणु ये सब को हिसाब कले 5,000-6,000 वर्षर इतिहास तेणु से तेणु द इवोल्यूशन ऑफ अर्बन प्लानिंग इज ओनली ऑफ 6,000 years old in ancient India particularly during so ancient India during Mauryas and Gupta's period separate urban planning and development agency existed हमारा जो मौर्य एवं गुप्त राजा को शासन काल में सेपरेट अर्बन प्लानिंग व्यवस्था थिला बोली हमारा इतिहास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड अछि द वर्क ऑफ अर्बन प्लानिंग वर परफॉर्म्ड बाय सिटी काउंसिल एंड टाउन काउंसिल सिटी काउंसिल बा टाउन काउंसिल द्वारा एगुडा का संपादन करा जाता along with the function of the state the city council modeled upon the village panchayat city council का हमारा village panchayat भलिया थिला and Gupta period we have evidence of existence of town council and the public was also very vigilant about to proper development of the city एवं पब्लिक पार्टिसिपेशन मध्य से समय सिटी विकास सहित होता एवं सिटी विकास संगे पब्लिक पार्टिसिपेशन मध्य होता गुप्ता राज शासन काल तेणु आमर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स इज वेरी वेल प्लान्ड a number of books are written by the ancient author about town planning हम भारत रे आमे बहुत पुराना शास्त्र मध्य टाउन प्लानिंग विषय देखा पड़ो जोटा तुम जानते समस्ते ये वास्तुशास्त्र गोटे पुराना आजिकल शास्त्र नुह वास्तुशास्त्र शिल्पशास्त्र जोटा कहते शिल्पशास्त्र वास्तुशास्त्र एगुड़ाक सब इवेन कौटिल्य इन इज फेमस बुक अर्थशास्त्र से खाली जे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पॉलिटिक्स कथा कहला नुहे अर्थशास्त्र गोटे मौलिक जिनस फंडामेंटल जिनस होची अर्थशास्त्र रे चाणक्य विलेज प्लानिंग और टाउन प्लानिंग विषय उल्लेख has given a vivid description about village and town planning. In Arthashastra, there is a beautiful reference of village and town planning. So there is another book named Manasara. Manasara गोटे शिल्पशास्त्र था एंकर जमी कौटिल्य अर्थशास्त्र से मनसार गोटे शिल्पशास्त्र था all these traditional very ancient books but it has a very unique value from variety of consideration अनेक गुड़े कारण taking the material the quality of test even during
ancient days, the quality of soil testing was very mature. By soil testing, different method by smell, by touch, by holding it on the hand. These are the soil testing method was very developed in the ancient India. Even soil, the color of the soil was also how it is tested. So these were the traditional Vastu Shastras that was provided a very rich source of knowledge of the traditional ancient people about the town planning. The soil, whose soil how much of the building will be of what height, soil testing. So that was the Shilpa Shastra, it was architecture by Manasara. Architectural design. So this shows the scientific approach to town village planning in ancient India. Shilpa Shastra, Vastu Shastra, Kautilyankara reference, proof in ancient India, our town planning was very scientific than the modern times. Our adhunika samay apekya setebelar town roads are well designed, very wider, residential colonies are well planned. In Arthashastra सब reference को village मतलब similarly design करा जाऊँगा बोली कि there is a reference in Arthashastra. In the Manasaranka Shilpa Shastra, सेटा गोटे great treatise on town planning and architectural design, and which consists of 75 chapters. 75 chapter reference dealing with each chapter dealing with one particular aspect of house building and town planning. So that's why there are different. There are some chapters are there which gives. The fourth chapter describes investigation of the nature of different types of soil. केमती माटी टेस्ट करिवो एवं को सॉइल ले केमती घर करिवो से सब विषय रेफरेंस जादी ए मानसरंग शिल्प शास्त्र चतुर्थ अध्याय रे ए विषय वर्णना करा जायछि सेवरल टेस्ट्स द्वारा केमती करा जाय पाइबो. The seventh chapter deals with the planning of the villages according to the suitability of the locations. को लोकेशन ले टाउन विलेज बिल्ड करा जाय परो सेति पई सब मते करा जायछि. 11th chapter deals with the formation of the cities, towns and fortress. दुर्ग केमती करा जिवो टाउन केमती करा जिवो ए सब विषय मध्ये को जायछि. विभिन्न चैप्टर describe करूछि ए सब. But however there are different types of town plans that has been mentioned in the Shilpa Shastra of Manasara. Taragare अनेक गुड़े types of town रही ताको कह जाय दंडका, सर्वाथो भद्रा, नंद्यावर्ता, पद्मका, स्वातिका, प्रस्तर टाउन प्लानिंग. टाउन प्लानिंग ये जो 8 डिजाइन ने 8 प्रकार डिजाइन ने टाउन बना जाय. So 8 types of town has been built regarding this in Shilpa Shastra of Manasara. Manasaranga Shilpa Shastra रे 8 प्रकार टाउन विषय रे पढ़ाई एवं टाउन गुड़ा ए प्लान रे गढ़ा जिवो. दंडका टाइप ऑफ टाउन प्लान प्रोवाइडेड 2 मेन एंट्रेंस गेट्स. दंडका रे 2 प्रकार एंट्रेंस गेट रहे जनरली अडॉप्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल टाउन. दंडका साधारणतः छोटो टाउन पई रही था. The second town plan is should be fully occupied by houses of various disciplines. जोड़ा सेकेंड होची हमरा सर्वथला सेटा दुई सब रेसिडेंशियल कॉलोनी पई ऑक्युपाई करा दिबो एवं टेंपल डोमिनेट द विलेज एवं सेटी टेंपल सब बेसी रहतो. थर्ड टाइप ऑफ टाउन प्लानिंग दैट इज नंद्यावर्त. नंद्यावर्त प्लानिंग वाज मेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टाउन्स and not for the village. एटा केवल टाउन नंद्यावर्त का केवल टाउन कंस्ट्रक्शन गठन पई जड़ित. नंद्यावर्त इज द नेम ऑफ ए टावर. नंद्यावर्त होची गोटे फुलर ना एवं से अनुसार एटा केवल टाउन. इट इज जनरली अडॉप्टेड फॉर द साइट्स आइदर सर्कुलर और स्क्वायर शेप. से टाउन टा गोटे स्क्वायर साइज रहबो बा सर्कुलर रहबो ए नंद्यावर्त. एवं द एडजॉइनिंग स्ट्रीट्स टू द टेंपल, द स्ट्रीट्स रन पैरेलल टू द सेंट्रल एडजॉइनिंग स्ट्रीट. सेंट्रल एडजॉइनिंग स्ट्रीट द पैरेलल स्ट्रीट जीवो रास्ता सब जीवो एवं टेंपल सहित मध्ये रिलेशन रहिबो. देन नेक्स्ट इज दैट पद्मका.
type of plan was practiced for building of the towns with the fortress all around. चारि करे दुर्ग थिबो मझिरे टाउन थिबो सेउडाकू पवन कुआजाय. The pattern of the plan resembles the petals of lotus radiating outwards from the center. Lotus जेमति रहिछि आउटवर्ड टू चारि कर उठे थिबो मझिटा जेमति रेडिएट करथिबो सेही टाइप रो डिजाइन न पद्म कासिटा लोटस डिजाइन न अछि. Then swastika type of plan contemplates some diagonal street dividing the site into certain triangular plots. It is triangular plot गुडा सब होइथिबो एवं the site need to be marked out into square or rectangle form रे थिबो. Then the Prastara plan is that of the site may be either square or rectangular but not triangular or circular. The sites are set apart the poor, middle class, and the rich and very rich. It's a category rich. A town planning रे अति धनी, धनी, मध्यम class, middle class, एवं poor पाई विभिन्न category of area सबु कर दी. तापर आसो कामुका. Kamuka plan of township is suitable for the place where the sides of the town is in the form of a bow or semicircular or a parabolic, or more applied by the towns located on the area of seashore. एगुड़ा सब समुद्र कूलिया टाउन पई ए प्रकार कामुका प्लान ता सुटेबल जोडी की टाउन गुडा को गोटे फॉर्म ऑफ बो बा सेमी सर्कुलर आकार थिबो. तापर चतुर्मुख टाइप ऑफ प्लान इज एप्लीकेबल टू ऑल टाउन्स स्टार्टिंग फ्रॉम द लार्जेस्ट टाउन टू द स्मॉलेस्ट विलेज. छोटा विलेज रु बड़ टाउन पर्यंत सब ठाई ए चतुर्मुख एप्लीकेबल. द साइड्स मे बी आइदर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हैविंग फोर फेसेस. और चारिटा एंट्री गेट थिबो, चारिटा फेस थिबो एवं रेक्टेंगुलर बा स्क्वायर साइज थिबो. तेनु after this type of Silpayatra, then the evolution of the town planning is very prosperous during Mughal period. Mughal period रे ये जो town planning दा बहुत develop करता. Mughal माने the town planning very flourished, very leap and bounds in during Mughal period. Many cities like Fatehpur Sikri, Ajmer, Ujjain, Bhagpur, Banaras, Delhi, Agra, ये सब गुड़ा और अनेक every they are the influence of Muslim architectural design, Mughal architectural design गुड़ा सब हिकरा. And Ujjain जेंतो हम जानी चाहिए Ujjain गुड़ा city of ancient India dating back to 6th century BC. प्रा षष्ठ शताब्दी बेसी ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रु Ujjain शहर डा रही आसी. जोड़ा उज्जैन डा बर्तन जोड़ा की मध्य प्रदेश रे गोटे शहर सेटा ख्रीष्टपूर्व षष्ठ शताब्दी रु एठी शहर रही आसी. So other in the regime of Akbar, a public works department was established for the planning and development construction work. Planning और development पाई उनका समय रे अकबर के समय रे गोटे public work department से खोली थिले जोड़ा की development town work रा करथला. All the Muslim rulers had a separate department of urban planning and development. Muslim ruler मानंग समस्त Muslim ruler करे urban plan town development पाई गोटे स्वतंत्र department से रखते. Like Romans, the Mughals too wanted to show their power and pomp by constructing monumental structure for the use of royal families at the cost of other citizens. ସେମାନେ गोटे Mughal और Roman माने उभय गोटे monumental structure सब तैयारी करथिले. क्या फल अनेक गुरुत्वपूर्ण सिटी सहर सब गढ़ी आसला गढ़ उठला. The planning of a grid pattern with strict architectural and land use controls on the main street. Then during British phase, the main emphasis of urban planning was based on their strategic linkage to port town. किंतु मुस्लिम अंग मुगल को परे ब्रिटिशर मान आसले ब्रिटिशर मान एम्फासिस चला the planning was based on their strategic linkage to port town. तेणु सेमानकर मेन पर्पस रहला ट्रेड एंड कॉमर्स. तेणु पोर्ट सहित सब टाउन गुडा को सिटी गुडा से जोड़िले. ता पोर्ट समुद्र पोर्ट थिबा स्थान पाखरे सब शहर माना गढ़ी उठले एवं सब लिंकेज करे रास्ता घाट को पोर्ट सिटी सहित. Then evolution of urban planning technique and solution initiated in the beginning of 20th century to tackle the problem of urbanization, which aimed at town improvement. तापरे टाउन इम्प्रूवमेंट बता उठला. The first urban movement improvement authority was constituted
in Calcutta during 1794. Prathama Urban Improvement Authority was constructed 1794 Calcutta रे गठन होइଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନୋମିନେଟେଡ୍ ଲୋକ ସବୁ ରହୁଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଙ୍କସନ संपादन କରୁଥିଲେ। Then Mr. H.V. Lanchater was appointed as town planning advisor to the Imperial Government of India. During British Raj, they have appointed a town planning as a town planning advisor to Government of India. Government of India को town advice करिया पाई ଗୋଟେ town planner advisor appointment कले। एवं after the independence, a fresh impetus in the front of urban planning and development took place. The Model Act prepared by the Town and Country Planning Organization got the approval of the ministry and ordered different plan. সেই সময়ে যে সরকার দুইটা লেজিসলেশন আনলে, গোটে ল্যান্ড আকুইজিশন ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড প্লানিং, এটা গোটে লেজিসলেশন আনলে যে সহরে ডেভেলপমেন্ট আর প্লানিং পাই ল্যান্ড আকুইজিশন সরকার ল্যান্ড আকুইজ করে আহରଣ জমি আহରଣ କରିପାରିବେ এবং ক্রিয়েশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফ অথরিটিজ টু अंडरटेक लार्ज स्केल एक्टिविटीज को मध्य से माने विभिन्न जगह एक्शन କରିପାରିବେ। देन the existing urban planning legislation in force India suffer from many deficiencies. हमर जो urban legislation सब अछि urban रा विकास तार समस्या तार टैक्सेशन ये सब पई जो सो अछि लीगल सिस्टम सेतरे मध्ये अनेक त्रुटि अछि जोटा करेक्शन हे पारिले urban planning ता urban रो डेवलपमेंट ता कर हे परिबो। एकर होजी overlapping of functions and jurisdictions in the absence of suitable provision for the coordination of the activities. हमें coordination होनी गोटे म्युनिसिपल एरिया स्टेट गवर्नमेंट काम करबो, जिला प्रशासन काम करबो, म्युनिसिपालिटी काम करबो, राज्य सरकार काम करबो, केंद्र सरकार काम करबो, किंतु एंका भीतर कोऑर्डिनेशन होनी बेला बेला सेटा ओवरलैपिंग कर सेटा मध्ये गोटे बड़ प्रॉब्लम। The municipality of legal and judicial structure organization exists without establishing a proper linkage among them. Municipality रो जो रहला legal और judicial structure ता भीतर गोटे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मध्ये अभाव रहउछि। तापर एम्फासिस ऑन प्लान प्रिपरेशन नॉट इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। हमर प्लानिंग सब अछि, हमर सीडीए बीडीए बहुत संस्था अछि, तांका पे बहुत संस्था अछि, बहुत खर्च होछि, तांकर प्लान सब पेपर वर्क सब बहुत होछि, किंतु इम्प्लीमेंटेशन जो रहउछि प्लान जो रहउछि किंतु इम्प्लीमेंटेशन बेलकु सब किछि नै। दैट इज इम्प्लीमेंट पोर इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन जदि भी इम्प्लीमेंट होछि तार कार्यकारी ठीक से करै परन की कार्यकारी करै। देन एम्फासिस ऑन प्लान प्रिपरेशन for the implementation is zero. Then inadequacy of effective and land acquisition provision. जमी आहरण रो इफेक्टिव जर किछि नै एवं हाउस बिल्डिंग द प्लान रो जो रहउछि ताकु मध्ये कई मानु नै, दैट इज नॉट प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। देन लैक ऑफ प्रोविजन फॉर ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर प्लान इम्प्लीमेंटेशन। प्लान इम्प्लीमेंट करिया पे जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप दरकार सेटा मध्ये तार डिफेक्टिव अछि। सबुठी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम रहउछि ए जे एरा जे पीपल पार्टिसिपेशन पब्लिक पार्टिसिपेशन हमरो नहीं। तो टाउन प्लानिंग रे बा एडमिनिस्ट्रेशन ने पीपल पार्टिसिपेशन रहउनी जो दिपाई देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन टाउन्स आर क्रॉप अप होछि। तो ए सब को करि पाले देयर आर सर्टेन इंप्रूवमेंट कैन बी हैपन। सो देन different plan period रे there are certain main concerns for urban planning पे केते गुडे कंसर्न अछि। तेनु से कंसर्न को गुडे रेशनल पैटर्न ऑफ लैंड यूज सजेस्ट करला, हैविंग ए इकोनॉमिक बेस ऑफ द सिटी गुडे सिटी रो इकोनॉमिक बेस को देखि यार गुडे रेशनल पैटर्न ऑफ लैंड यूज को डेवलप करेबा एटा गुडे पॉइंट होइछि, सेटा गुडे मतलब कंसर्न। देन टू इंप्रूव द लेवल ऑफ लिविंग एंड कंडीशन ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इन केस ऑफ लोअर इनकम ग्रुप सेटा मध्ये गोटे कंसर्न। शहर रे जो माने कम आयकारी लोक अछंती तांका पई उचित घर गोटे मानवीय परिवेश प्रदान करबा सेटा मध्ये गोटे प्रकार प्रॉब्लम अछि। टू रैशनलाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल एट देयर डोरस्टेप इज आल्सो स्टिल ए प्रॉब्लम। सेटा मध्ये गोटे कंसर्न ऑफ द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अछि। देन व्हाट आर द साइजेस ऑफ टाउन एंड सिटीज व्हिच वुड बी मोस्ट एडवांटेजेस फ्रॉम द इकोनॉमिक एंड सोशल
टाउन रो साइज कोन हवा दरकार केते पॉपुलेशन अकोमोडेट करिया दरकार ए विषय किछि सेमति किछि स्थिर नाही जोडा कि मतलब मोटे हम पाई कंसर्न pursue the ratio of rural and urban population to release the pressure on rural land and maintain the economic and social balance on this तेणु आमर रूरल अर्बन रेशियोटा केते हवा दरकार से विषय किछि पर्यंत प्रतिहिनी ए सब को गोटे एटा मध्ये गोटे हमर सब कंसर्न टू ऑब्जर्व अर्बन लेबर सप्लाई with increased income of the urban poor in the wake of stagnant economy तेणु ऑब्जर्व अर्बन लेबर सप्लाई अर्बन को पेरिफेरी एडजेसेंट रूरल एरिया जो ह्यूज माइग्रेशन होची माइग्रेशन ऑफ रूरल लेबर माइग्रेशन होची सेटा को केमती ऑब्जर्व करबोटा एटा मध्ये गोटे बड़ा कंसर्न हाउ टू ऑब्जर्व देम बा आसिग्री सेने बस्ती करी कि दउछ सो सेटा मध्ये गोटे प्रॉब्लम होची कंसर्न ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्लम मैनेजमेंट मध्ये गोटे कंसर्न सो ए सब कंसर्न को मीट करिया पई नेशनल प्लान सिंस द फर्स्ट इंसेप्शन ऑफ द फर्स्ट प्लान पीरियड रो विभिन्न स्टेप निया जाउछ तेन प्रथम प्लान गिव स्ट्रेशन द फर्स्ट प्लान गिव स्ट्रेशन ए रिहैबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज बाय ऑगमेंटिंग द स्टॉक ऑफ हाउसिंग सप्लाई रेफ्यूजी मानकर रिसेटलमेंट बाय प्रथम प्लान ता ऊपर गुरुत्व देला सो सेकंड 5 ईयर प्लान हमरा गुरुत्व देला द मेथड ऑफ सिक्योरिंग प्लान डेवलपमेंट अर्बन एरिया जो डेवलपमेंट तो प्लान डेवलपमेंट करबा एवं एक्सपेंशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज एवं घर सुजोग केमती सब लोक पाइबे सेति पय गुरुत्व देला आउ डेवलपमेंट ऑफ सिविक एम्यूनिटीज ए तीनटा पॉइंट ऊपर सेकंड प्लान गुरुत्व देला द थर्ड प्लान गुरुत्व देला the preparation for the 7th master plan for practically all the major cities eta bastorita one master plan kala control of land values physical planning of the land use ye सब upare bastorita master plan yojana kala then fourth plan goda national urban land policy frame kariya upare gurutwa dela fourth 5-year plan amara to meet the concerns of the urban planning ए पूरा नेशनल अर्बन लैंड पॉलिसी पूरा फ्रेम करिया ऊपर गुरुत्व देला एवं अर्बन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन लैंड एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एवं प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान ऑफ सिलेक्टेड टाउन्स ऊपर ए फोर्थ प्लान बेसी गुरुत्व देला देन फिफ्थ प्लान व्हिच स्टार्टेड इन 1974 एंड कंटिन्यूड टिल 1979 से मध्य गुरुत्व देला कतका ए ऊपर हमरो दैट स्लोगन रिमूवल ऑफ पॉवर्टी and attainment of self-reliance. That was the call of the fifth plan. Removal of urban poverty and the attainment of self-reliance. Increase of civic services in urban center. Efforts to tackle urban problems in metropolitan cities. To promote development of smaller towns, small town of Vikas Kindota. It assists in the implementation of project of national importance. जो नेशनल इंपोर्टेंस प्रोजेक्ट होइला प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस ताको एगुडा सब रहला तापर सिक्स्थ प्लान जोटा 78 रु 23 जगह रहला इट गिव्स मोर एम्फासिस ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम अर्बन रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम को समाधान करबा ऊपर सिक्स्थ प्लान विशेष गुरुत्व देला सो these different 5-year plans has give stress to meet the different concern of the urban administration. These different plans give stress on these different aspects so that urban development would be possible. So another in urban society, urbanization of people is meaningless without urbanization of space. It is the one important. You know, urbanization of people is meaningless without urbanization of space. जदि आमे अर्बन स्पेस रो अर्बनाइज करि परनै सेमति हापाजड होइले गाडी आबडा खबडा हापाजड होइले टाउन ग्रोथ होउची स्पेस रो जदि अर्बनाइजेशन होनी त लोकंगर अर्बनाइजेशन माने किछि नै तेनु वी मस्ट अर्बनाइज द स्पेस सो सेति पई डिफरेंट स्टेप्स मस्ट हैव टू टेकन बाय द local administration and under the traditional approach of urban planning there was the concept of master plan. But master plan concept stress since the master plans are basically land use plans. Master plan land use plan ko bujhaye. Their subject and object interest was development of use of space. If the space use haba, development haba, e upare gurutwa diye. Tenu e sabu ko ame dekhi parle
टाउन रो डेवलपमेंट टा बेटर ही पाइबो देन सर्टेन न्यू अप्रोच टू अर्बन प्लानिंग आउ कोन नुवा अप्रोच हमें करि परिबा अर्बन प्लानिंग द ट्रेडिशनल अप्रोच टू मास्टर प्लान हैव many limitations अछि which can be overcome and can be geared up for development only तार केते लिमिटेशन हमको नुवा प्लान करिया पड़िबो कोन करिया पड़िबो ना तार ए स्कोप टाको वाइडर सिटी रीजन थारु आउट के वाइडर करिबा elaboration of master plan for land use is to be effected within the context of regional development plan सेकितरम सिद्ध रखिबा तापरे इट फोकस ऑन पॉलिसी स्टेटमेंट rather than map the relationship then its process provide a different mix of regulations विभिन्न प्रकार रेगुलेशन करबो विभिन्न लोकल रीजनल और नेशनल ऊपर रेगुलेशन करबो ए जो करि परले हमें ए न्यू अप्रोच माध्यम रे जो मास्टर प्लान लैंड अछि सेटा आउट के इफेक्टिव हे परिबो एवं लोगों को पर्पस सॉल्व करिबो एवं अनेक अर्बन प्रॉब्लम को सॉल्व करिबो देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी देन जे तुम कहि दिली हमर प्लान गुडी को गुडे प्लान देला कि फोर प्लान जे नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी गुडे प्लान करिया पई गुड करा तेनु तार मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल कोन to promote the welfare of the society general and urban area in particular माने साधारण समाज एवं स्पेसिफिकली अर्बन सोसाइटी रो विकास पई हमको गोटे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लान फॉर्मुलेशन करिया को पड़िबो एवं सेति पई तार पर्पस रहइबो तार अनेक ऑब्जेक्टिव अछि ग्रेजुअल एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी favor a pattern of urbanization and economic development educating the private and social cost of urban development convergence of inter-regional income and growth differential ए सब ऑब्जेक्टिव को हासिल करिया पई हमरो ए नेशनल अर्बनाइजेशन प्लानिंग करा दिबो एंड द एंटायर अर्बन कम्युनिटी शुड बी टेक पार्ट इन अर्बन प्लानिंग एवं समस्ते अर्बन कम्युनिटी रो लोक ता सब सिटी कम्युनिटी केमति अर्बन प्लानिंग रे पार्टिसिपेट करिबा सेटा मध्ये हमर मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी रही so this then media and governance so urban governance रो अनेक समस्या को समाधान करिया पई रोल ऑफ मास मीडिया इज प्रमोटिंग ए गुड गवर्नेंस इन द अर्बन एरिया अर्बन गवर्नेंस को आउट के रिवाइटलाइज करिया पई हेले हमको मास मीडिया रो गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका अछि So, in the recent years, urban areas, specifically the cities, are enhancing the standard to compete the global market, to attract investment. तो जेहेतु हमें ग्लोबल मार्केट रे हमर टाउन को शो करिया चाहू सेति पई हमको कम्पीट करिया को पड़िबो ग्लोबल मार्केट जने इन्वेस्टर आसीबो जे शहर रो स्थिति भलो नाही ताले के इन्वेस्टर आसीबे नै शहर इन्वेस्ट करिया पई तो सेति पई वी हैव टू प्ले आवर रोल इन दिस द मीडिया mass media have a greater role to play to revitalize, to reactivate the governance, town governance, and one of the resultant change in the transformation is the organizational labor process and a shift from manufacturing economy to service economy. हमें हम टाउन टा को यदि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी रो हमें सर्विस इकोनॉमी के ट्रांसफर करबा ताले अर्बन गवर्नेंस माने हम अर्बन रो डेवलपमेंट आउट के त्वरान्वित हो पाइबो तो सेति पई हमको ए सब केतरा स्टेप नेबो पड़े मीडिया गवर्नेंस मोस्ट सिटीज आर लैकिंग द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन एबिलिटी सर्विस यूटिलिटी सर्विसेज एंड गवर्नेंस मैकेनिज्म ए सब अभाव रही तेणु एको पूर्ण करा पई मास मीडिया हेल्प्स इन ब्रिंगिंग अटेंशन टू द प्लाइट ऑफ द पुअर गरीब लोकंकर अर्बन रे बास करथिला अर्बन पुअर लोकन प्रति अटेंशन सृष्टि करिबारे मीडिया रा मास मीडिया गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही मीडिया आल्सो सर्व्स एज एन कनेक्टिव बिटवीन द अर्बन पुअर एंड द गवर्नमेंट अर्बन पुअर और गवर्नमेंट भितरे गोटे कनेक्टिव भलिया काम करिवो के मीडिया सो चेंजेस इन मीडिया सिस्टम have threatened the bonds between the media, people and government. तेणु media, people और government भितरे जो relation better of people ताले इटा better. But nowadays we are seeing that the present modern media are also follow a logic of inclusion and exclusion of communities. केते को community को समान include करचंदी केते community के people who are commercially viable
एमाने सेही कम्युनिटी को बेसी एक्सपोज करछन जो माने कमर्शियली वायबल एंड prospective buyers and clients of media. For a better governance, there is a need for developing a complex mechanism and a media institution through which poor citizen and group can articulate their interests and mediate their differences and can mediate their view through the media. सेटू करि परले हमरो बेटर हे परिबो. The relationship between mass media and society are inextricably interlinked. Mass media and urban society is very closely interlinked. Mass media helps in empowering people as well as creating awareness regarding the age-old operation, rights of the citizen, and the need of freedom of speech and expression. ये सब को आम हासिल कर थ्रू दिस मीडिया कवरेज. तेणु मीडिया गोटे क्लोज रिलेशन अच्छी. There is a better so this freedom is crucial to human creativity. ए फ्रीडम न रहिले क्रिएटिविटी बा सृजनशीलता कमी जीव. तेणु मीडिया ही prosper करि परिबो creativity by giving freedom to people. The mass media has an important role to play in generating both trust and distrust in citizen upon governing institution. गोटे governing institution नै मे भी municipality मे भी state government तार trust create लोक मान को भीतर trust create करबा एवं distrust create करिवारे मीडिया भूमिका गुरुत्वपूर्ण. Media can also expose nepotism, corruption in high offices, in metropolitan administration, in municipal administration. ये जो nepotism चलती, favoritism चलती, ताकू मत expose करिवारे mass media रा भूमिका मध्य बहुत रही. तेणु ये सब को जदि तापर partisan media, some medias are following supporting a particular party. तेणु partisan media को मध्य हमें चेक करि परले हमारा media house society relation better. There is a need to create a democratic public and influence the public institution to be responsive to people. But a public institution गुड़ाक responsive हवा people. सरकार हो अबा जेकोन से public institution हो सेमाने केमती responsive हेबे सेटा होची mass media रा काम. Mass media सेमान को responsive करिवारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका सृष्टि करिवो. This mass media can play a very sustain human relationship, play a very important role in sustaining human relationship in urban atmosphere. Urban atmosphere रे गोटे human relationship sustain करा जाय परिबो এবং human relationship करी better ए करी परिबो सेटा को साहाय्य करिवो mass media. Without effective channels of communication among the members of a community, no system of governance can exist. No system of governance can exist or can become effective unless and until there is a effective channel of communication among the members of a urban society. यदि गोटे urban administration पाखरे कोनोसी effective channels of communication नहीं, then mass media will provide this channel to the people. ताले हमें सेटा better हे परिबो, that is a better relations. So media in contemporary urban governance. There are a number of media has been in contemporary urban governance. Vartaman Sampratika governance in context, the media plays an important role in the exertion of power and distribution of values. Media affects the overall quality of public life and also shapes people engagement in the specific policy. Media का गोटे वर्तमान गुरुत्वपूर्ण recent phase रे media governance is very urban governance रे media plays a very important role. आमे media टाकू आमे urban governance रे आमे तीन भाग विभक्त कर परिया. गोटा होची mainly officially owned media and a beneficiary of government patronage, government रा patronage करुवा media एवं conformist and आ गोटे neutral media. एमती तीनटा कैटेगरी ऑफ मीडिया रे अर्बन गवर्नेंस रही जो माने विभिन्न प्रकार एडवर्टाइजमेंट पाउछनी म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन से माने रियल प्रॉब्लम को सब एक्सपोजर करिवे नाही. तेनु सेति पई हमको नेसेसरी स्टेप्स शुड बी पीपल शुड बी कॉशियस अबाउट दिस एस्पेक्ट. Roles and responsibility of media.
So media in a modern public life रे media रा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका अच्छी. एक रे media can create consciousness among the people. Second, media can expose all kinds of corruption, nepotism that is going on in administration. Third, media can ventilate the needs of or voices of the poor. Media can express the poor services provided by the municipal administration to the people. Media can express about the problems, that is different urban problems or different health sanitation problems that is found in different areas or in the town. Town विभिन्न एरिया रे जो सब प्रॉब्लम रहउची ताकू एक्सपोज करिवारे मध्ये एटा गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिवो. और मीडिया कैन एस्टैब्लिश कैन एक्ट एज ए लिंकेज between the people, the governance and the government, the administration, implementing agencies and the government. एंका भितर गोटे लिंकेज हिसाब रे मीडिया कार्य करि परिवो. Another point होची the media can also ventilate the grievances of the people. लोकमानकर grievances का दावी ये सब को ventilate कर परिवो. The media can expose the poverty or people who are marginalized people, expose the marginalized people, needs and necessities of marginalized people, excluded categories people. And media can also expose the problems of the physically challenged, mentally retarded and the divided people. ये सब काम को मीडिया एक्सपोज द्वारा तार एक्सपोज कर परियो एवं तार रोल प्ले कर परियो. It can discover the ways of think about themselves, how to participate in governance, people's participation in governance को एटा गोटे encourage कर परियो. How to people will participate in governance, people participation करिबारे केमति मीडिया governance रे participate करिवे ताको मध्ये मीडिया प्रमोट कर परियो. Media how माने create consciousness or educate people about the public administration or municipal administration. All these are the roles. Then media can also expose the criminal negligence by the administration or the police administration. Criminal negligence. And media can also report various poverty, hunger, that is existing in municipal areas. Municipal जो सब ये poverty, hunger exist करथुवा ताको media can also play an important role in election, promoting democratic decentralization of power. रे media माध्यम रे गुरुत्वपूर्ण भूमिका एवं civil society organization, how civil society organization will participate in the administration. Administration करी administration ताको बेसी people responsive people friendly करी परियो सेथिरे मध्ये मीडिया रे गोटे गुरुत्वपूर्ण. To make the administration more people friendly, mass media has a greater role to play. So these are the roles that is and responsibility of the mass media in an urban administration. Then with this we finish the block 5, blocks 8. So any question, any doubts, any misunderstandings, if any, please ask. Sangram. Any question?